Good morning, friends. Welcome to my channel, Law Arena. In this video, we are going to see the list for the packing for Canada student visa. सो हम जब भी कनाडा जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस सारी चीज़ों का हम इसमें इंक्लूजन करेंगे और आई हैव ट्राई टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स ट्राई टू मेक इट मोर होलिस्टिक जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो मैंने सारे ही पार्ट्स इसमें कवर किए हैं be it medicine part or be it starting from travel luggage. So all those things I have covered in this video. And if you like my videos, then please do not forget to subscribe so that इससे मुझे motivation मिलती है. And, I'll be making more videos for this. So let's get started with this. सो स्पीकिंग ऑफ द ट्रैवल लगेज इसमें आपको पहली बात तो है कि कैरी ऑन बैग चाहिए जिसमें आइदर इट्स लैपटॉप बैग और कैरी ऑन बैग जो भी आपकी नेसेसिटी है उस हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है चेक इन बैग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि उसी में आप आपका सारा सामान भर के ले जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्वालिटी चेक इन बैग because उसको if it is not hard coded material then उसको फटने के और वो टूटने के चांसेस हैं। सो जस्ट इंश्योर दैट आप कोई स्टैंडर्ड कंपनी का लीजिए जिसमें इंटरनेशनल वारंटी आती है और हो सके तो TSA लॉक वाला लीजिए जिससे जो भी एयरपोर्ट ऑफिशियल्स हैं उनको ये चेक करने में इजी रहे अगर उसमें कुछ डाउट जाता है तो। Thirdly is the cabin bag. ये आप सिंपल वाला cabin bag ले सकते हो because it is any which ways supposed to be in the cabin with you. तो ये बहुत ही uh, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं इसमें cabin bag में कोई भी ब्रांड का अच्छे से ब्रांड का आप ले सकते हैं। एंड लास्टली आ जाता है स्लिंग बैग फॉर द डॉक्यूमेंट। सो बहुत आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे, आपको पासपोर्ट कैरी करना होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको बार बार शायद निकालनी पड़ी होगी, कुछ फॉर्म साइन करना होगा, कुछ पेन वगैरह चाहिए। सो उसके लिए एक स्लिंग बैग लेना रिकमेंडेड है, डिपेंड अपॉन योर नीड इफ़ यू आर कंफर्टेबल। नाउ गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस क्लोथिंग, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द अंडरगारमेंट्स बिकॉज इसको मिनिमम आप अराउंड 15 ले सकते हैं बिकॉज आई हैव हर्ड दैट इन कनाडा कई जगहों पे लॉन्ड्री बाई वीकली होती है या तो वीकली होती है। सो अंडरगारमेंट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट री यूज। सो जस्ट just try to get at least 15, so that is for 2 weeks. Then body warmer, t-shirts, hoodies, sweatshirts, winter jacket. It depend on your intake. If you are going in Jan intake तो ये ज़रूरी होता है, बट अदर intakes के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। So just try to get some wind cheater from here and buy from there if you are not going in Jan intake. But if you are going in Jan intake, then it is very much necessary to have it from here itself. और Decathlon या ऐसे कोई भी अच्छे ब्रांड से आप ये शॉपिंग कर सकते हैं। देन हो गई जीन्स, फॉर्मल पैंट्स, बॉक्सर्स, फॉर्मल सूट, ट्रेडिशनल वेयर। वहाँ पे जैसे दिवाली या कुछ भी चीज़ों का सेलिब्रेशन होगा तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा, उसके लिए ट्रेडिशनल वेयर ज़रूरी है। रेन कोट, अम्ब्रेला। देन स्पीकिंग ऑफ शूज़ इज़ फॉर्मल शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, क्रॉक्स या ग्लाइडर ले सकते हैं सो दैट आपके फुट कवर रहे एंड इट विल बी ईजी टू कम्यूट। देन बेल्ट, कैप्स, वॉलेट, सॉक्स, विंटर कैप, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं in order to be equipped with the clothing section. Now let's move to the next section, which is important one, food. So obviously ready to eat food है जो instant mix है, oats है, snack bar है, protein bar है अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं तो दाल है, देन राइस है, देन स्पाइसेस सच एज गरम मसाला, चिली पाउडर, टर्मरिक, अजवाइन, जीरा, हींग। if you're trying if you're getting your hands into cooking as well then आप उस हिसाब से आपका सामान ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हियर इज डू नॉट कैरी सॉल्ट और एनी शुगर और एनी वाइट सब्सटेंस, पाउडरी सब्सटेंस, because that is doubtful for this
airport authorities, and they may check your luggage more thoroughly. So just try to avoid that. Now, speaking of the electronics, you can carry power bank, which is of 20,000 mAh, trimmer, charger, data cables, universal travel adapter. ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा क्योंकि वहाँ पे जो पिन है वो अलग रहेंगी. So just carry these. In cases हो गया, screen guard हो गया for the mobile accessories, then external storage, pen drive, laptop sleeve, earphones, smartwatch if you are having one, wireless speaker if you are a music fan, and DSLR if you are an avid photographer. So ये सारी चीज़ें कैरी करना ज़रूरी है if you are really wanted to be equipped. ये बेसिक चीज़ें हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ है कि सबकी नीड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है. सो जस्ट इंश्योर दैट यू कैरिंग द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम. और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको आपके चेक इन बैग में नहीं रखनी, बल्कि कैबिन बैग में रखनी है. Speaking of next is of the medical side, wherein we need to carry sanitizer, mask, face shield, medical kit का जो पाउच आता है, जेनरिक मेडिसिन हो गई विद प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि पैरासीटामॉल है, कमीफ्लैम एंड ऑल दोस थिंग्स. देन फर्स्ट एड किट, बैंडेड, सफ्रामाइसिन, इनहेलर, Volini spray or any pain spray. I generally use Volini, so I just mentioned that. Cough spray and nasal spray. Speaking of toiletries, you can carry the brush, toothbrush, tongue cleaner, face wash, body wash, deo, perfume, comb, nail cutter, scissor, shaving foam, gel, lip balm, sunscreen, moisturizer, hair conditioner, shampoo. Now, speaking of oil and liquid substance, it has to be of 100 ml. So just ensure that you are carrying as per the guidelines provided by your airlines. Now, what are the other items which are necessary and good to carry, which is bed sheets. और bed sheets काफ़ी महंगी हैं, so it is always advisable to carry the bed sheet from here. Then there is a travel pillow, which will be very comfortable for your 19 to 20 hours of flight. Then inflated pillow आप ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके शायद आपको पिलो खरीदने जाना पड़े. सो एक इन्फ्लेटेड पिलो आता है जिसमें आप हवा भर के उसको यूज़ कर सकते हैं. व्हेन जगह भी कम लेगा उसका, इट्स अ वेरी इजी टू कैरी. Then pen, of course, and full scale and body scrub if you are really using it in your daily life. So these were the items which are necessary in a nutshell. And I think you enjoyed my video. And आपने अगर ये लिस्ट फॉलो की है तो बाय एंड लार्ज मोस्टली सब चीज़ें कवर हो जाएंगी. और इसमें आप अपने तरीके से अपने अपने यूसेज के हिसाब से आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं. तो आप उस हिसाब से इसको प्लान करके चल सकते हैं जिससे आपको विद इन द डिफाइंड केजीज जो आपको रहेगा. व्हेन यू आर बाइंग एनी टिकट उसमें लिखा होगा कि इसमें 1 बैग अलाउ या 2 बैग अलाउ है, तो उसके हिसाब से आप इसको टेलर कर सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड फ्रेंड्स. Thank you for watching this video, and please subscribe my channel so that I'll get motivation to create more videos. And thank you. See you in next video. Thank you very much.